Hello everyone and welcome to VMC fundamental classes, and we were doing the KVPY series. और आज का जो हमारा टॉपिक है of this session will be transport in plants. Okay, so we are starting with plant physiology. तो इससे भी questions आते हैं in your KVPY. So we'll see the topics. Okay, so आज का जो topic है transport in plants. So as you all know, कि plants में there are different tissues which will help. Okay, plant tissues अलग अलग होते हैं. तो जो transport में जो help करते हैं tissues, they are mainly the xylem and phloem, which are the complex tissues of the plant. One will conduct the water, while the other will conduct the food. So जो xylem होता है, xylem conducts water and phloem will conduct the food throughout the plant. Okay. Also, in this session, we will see the different modes of transport, the means of transport which are there in the plants. उसके अलावा हम different types of solutions देखेंगे. What is the effect of the solution on the plant cell, and what is water potential and all. So वो सब कुछ हम आज deal करेंगे in this session. So चलिए शुरू करते हैं. Transport in plants. So transport का मतलब क्या है? So basically to travel for some distance we require some means. Okay, a transport facility, जैसे कि हम एक city से दूसरे city को जाने के लिए we travel to a vehicle. Okay, or we take a bus and all. So वैसे ही plants जो है they need to get supplied with some substances, जैसे कि water हो गया, minerals हो गए, organic substances हो गए, nitrogenous substances हो गए, okay, glucose हो गया, sucrose हो गया. तो ये सारे जो चीजें हैं in the plants that has to get transported, okay, from one place to another, and for that they require some different modes of transport or different means of transport, such as the ones which will have मतलब which require some energy and some which do not require energy. मतलब जो short distance होते हैं या long distance होते हैं, तो ये सब कुछ होता है in the plants. And short distance is mainly from one cell to another by the means of diffusion. Okay, diffusion में energy use नहीं होती है, so simply जो gases होते हैं वो easily diffuse होते हैं from one place to another. But जो long distance होता है, long मतलब from the root to the top of the plant. Okay, root to the top of the plant. तो उसपे बहुत ही energy utilized है एक तो, and it is a very long transport, and उसके लिए specialized tissues चाहिए होते हैं, जो कि होते हैं complex tissues, xylem and phloem. So transport in plants will deal with the modes of transport. So the transport can be either a short distance okay, it can either be a short distance transport or a long distance transport. So short distance mainly यहाँ पे we have the passive transport. Okay, passive transport and the active transport. Okay, passive transport and the active transport.
whereas जो long distance जो होते हैं, it is through the use of some tissues. Okay, so it will be through xylem and the phloem. Okay, xylem और phloem होगा. Okay, so it will be through xylem and phloem. So जो transport xylem and phloem के through होता है, so that is known as translocation. So the transport through xylem and phloem is called translocation. Okay, so translocation जो है वो bulk movement होता है. It is in a mass movement. Okay, bulk movement होता है of the substances, water, minerals, organic substances. So that is called as the translocation. So पहले हम active और passive movement देखेंगे, transport देखेंगे, फिर उसके बाद we will go later on to the long distance transport. Okay, so short distance transport में we have 3, मतलब जो भी passive है और active है, तो we have in passive we have 2 and active is another one. So in passive transport we will study first one, that is diffusion. Okay, so diffusion जो है, it is the movement of substances. The substances can be gases, it can be the liquids also. Okay, और solids का diffusion नहीं होता, solids में diffusion होता है. Okay, solid substances का diffusion नहीं होता, उसमें diffusion हो सकता है. So diffusion is mostly seen of gases. So over here there is movement of substances from high concentration region to a low concentration region. Okay, so this is called as diffusion. There is no expenditure of energy. Okay, for example, if this is one beaker और यहाँ पे दूसरा beaker है, मतलब this is one cell and this is another cell, or this is one room and the another room. This is room 1 and this is room 2. Okay, so there is a little bit of opening in this room. Okay, ये opening है, a window है, you can say, connecting both. So in this room यहाँ पे there is high concentration of some gases. Okay, और यहाँ पे बहुत कम है gases. So what will happen? The movement will take place from here till here. ठीक है, यहाँ इधर से movement होगा of the gases
from room 1 to room 2 and the movement will take place till the equilibrium is reached. मतलब दोनों में एक ही टाइप कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तब ये मूवमेंट जो है वो थम जाएगी. So that is diffusion. Now diffusion जो है, it is said to be a downhill process. Downhill process. इसको downhill इसलिए बोला है क्योंकि it is from high concentration to a low concentration. High to low जा रहा है तो it is a downward process. Next हम देखेंगे some factors affecting diffusion. Okay. So पहला जो factor है जो affect करता है that is diffusion is said to be inversely proportional to the size of molecules. That means अगर बड़े size होंगे of the molecules, then there will be less diffusion. Okay. More the size of molecules, less will be the diffusion. Next is diffusion जो है is proportional to temperature. अगर आपने temperature बढ़ा दिया, then there will be more of diffusion. Diffusion is depends on permeability of molecules. Permeability of membrane. ठीक है, permeability of membrane. अगर permeable membrane है तो ज्यादा से ज्यादा diffusion होगा, non permeable है तो there will be less of diffusion. Okay, और non permeable है then there won't be diffusion. नेक्स्ट बात कर रहे हैं फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन. सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इट इज ऑल्सो a type of diffusion wherein the movement of substances will take place from a region of higher concentration to a region of lower concentration. But यहाँ पे जो substances हैं they will move through some proteins. Okay, they will require some protein and the hydrophilic, okay, जो hydrophilic substances होते हैं वो facilitated diffusion से ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि पोलर सब्सटेंसेस जैसे वाटर यू कैन से. ओके, वाटर विल मूव टू द थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. Okay. Hydrophilic substances are transported next proteins are required over here. Okay, proteins are required. Okay, proteins will be required. यहाँ पे भी there is no energy requirement. So this is also a kind of a diffusion only. So यहाँ पे भी no energy will be required. So requirement of energy is nil. And this is also called as a downhill process only.
तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन्स यहाँ पे यूज होते हैं, ओके, दीज आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ओके, इसलिए यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज होते हैं। So there are two types of proteins which can be used in here. So एक जो प्रोटीन है that is channel protein, okay, channel protein बोलते हैं उनको, और दूसरे हैं that is carrier proteins. Okay, channel protein and carrier proteins. Channel proteins are the transmembrane proteins. Okay, which has a pore in the center. जैसे ऐसे, ओके, ये एक चैनल प्रोटीन है, तो यहाँ पे they will have a pore through which the substance will pass. Okay, so they will have a pore in the center. Whereas the carrier proteins जो होते हैं, यहाँ पे there is no pore formation, कोई pore form नहीं होता है। चैनल प्रोटीन के थ्रू ट्रांसफर जो होगा, ट्रांसफर इज फास्टर, ओके, बट द कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जो ट्रांसफर है इज अ बिट स्लोअर, ओके, बट स्लोअर मतलब कंपैरेटिवली स्लोअर होगा। और ये बोला है कि यहाँ पे द ट्रांसफर इज फास्टर एंड 10⁸ आयोन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इन अ सेकेंड, ओके, इन अ सेकेंड 10⁸ आयन्स ट्रांसफर होंगे, बट यहाँ पे 100 से 1000 आयन्स ही ट्रांसफर होते हैं इन अ सेकेंड, ओके, इन अ सेकेंड सिर्फ 100 से 1000, सो इट इज वेरी स्लो, यू कैन से। तो जो ये चैनल्स होते हैं, there are 3 types of channels which you find in the living system. Okay, so पहला channel जो है those are ion channels. So as the name suggests, it only passes the ions. So ions इनके through pass होंगे. Next is the water channel, जहाँ water pass होगा. And the third one, they are called as porins. Okay, so over here they have a larger pore size, so which can pass some larger proteins. Okay, water channels and this both, they have small pore size. This one ion channel is for ion transport, water is for water transport. Okay, so water channels may you have the aqua channels. Okay, and it is said in a system there are 8 types of aqua channels present. Okay, system. Now, basically, when we talk about porins, जो porins होते हैं, they will transport small size proteins. Okay, ये transport करते हैं small sized proteins. Okay, they transport small sized proteins, and if you see the biological system, मतलब जो भी living organisms है, उनमें से they are present in mitochondria, chloroplast, and outer cell wall
layer of gram negative bacteria. So you can say they are found in gram नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, इनके दोनों में आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वहां पे, एंड दिस इज इन द LPS लेयर, दैट इज द लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर. When we talk about carrier proteins, okay, जो carrier proteins हैं, they can do the transport in two ways. Okay, एक है को ट्रांसपोर्ट और दूसरा है यूनिपोर्ट. ओके, को ट्रांसपोर्ट एंड यूनिपोर्ट. सो को ट्रांसपोर्ट का मतलब है यहाँ पे दो सब्सटेंसेस एक साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे इन एंड आउट और इन द सेम डायरेक्शन. ओके, सो इफ इट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड in opposite direction, okay, then it is called as antiport. Okay, if it is getting transport in the same direction, that it is called as symport. देखो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, this is the transmembrane protein. If the substance A is going inside and the substance B is coming outside. ओके, सो यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक अंदर जा रहा है सेल के तो दूसरा सेल के बाहर आ रहा है, तो दिस इज एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट. ओके, एंड सिम्पोर्ट जो है over here, A substance will go inside, okay, B substance will also go inside. So यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन एक ही होता है, दोनों मॉलिक्यूल जो है वो एक साथ अंदर जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज सिम. सिम मतलब सेम. यूनिपोर्ट का मतलब है सिर्फ यहाँ पे वन सब्सटेंस एट अ टाइम. ओके, वन सब्सटेंस एट अ टाइम. अगर एक सब्सटेंस है, इट इज गोइंग इनसाइड और आउटसाइड, ए सब्सटेंस जो है वो अंदर जा रहा है. सो दिस इज अ यूनी मतलब वन. ओके, एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. Next you have the active transport. Now active transport, इसका अगर डेफिनेशन देखते हैं तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई concentration. Okay, low concentration to high concentration, so that is called as active transport. तो यहाँ पे it is against concentration gradient. Okay, concentration gradient high to low होता है, तो यहाँ पे it is against, it is going from low to high, that's why it is against the concentration gradient. यहाँ पे it requires ATP. Okay, it require ATP expenditure क्योंकि यहाँ पे it is going in the opposite direction, so ATP यहाँ पे required है. Also it requires proteins of pumps. Okay, require proteins, or there is pumps which are required. So these are basically the proteins only. Pumps are called as the proteins which are required. And since यहाँ पे the direction of movement is from low to high, so this is called as uphill. Okay, low level से upper level में जा रहा है, so it is uphill movement.
Next, we will discuss with the different types of membranes. Okay. Now, if you see the different living organisms, they will have different types of membrane through which the substances can move. Okay. तो अलग अलग types के membrane होते हैं. You have the permeable, then you have impermeable, semi-permeable, and selectively permeable. Okay, and we will talk with respect to solvent, solute, then ions, gases, RNA, DNA, enzymes, and we will see some examples. Okay, तो अगर solvent है मतलब these are the different things which can pass through this membrane. So if the membrane is permeable, so it will be permeable for all the substances. So सारे substances pass होंगे through this membrane. Okay, and the example of such membrane is the cell wall. Okay, cell wall of all the ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ओके सॉरी एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, तो प्लांट सेल्स हो गया मतलब सेलुलोज का सेल वॉल हो गया, so it can be cellulose, it can be chitin, or it can be silica. So everything will be permeable to the substances written above. Then impermeable अगर है, इसका मतलब वो कुछ भी पास नहीं करेगा, it will not pass anything. So such cells are suberized. So suberized coxal, cutinized epidermal cells. ओके ये रहेंगे. Then semi permeable में अगर हम बात करते हैं तो it will pass the solvent, it will not pass the solute, it will not pass the ions, gases will pass through it, RNA DNA pass नहीं होंगे, enzymes भी pass नहीं होंगे. So some example will be parchment paper, okay, parchment membrane, then you have bladder membrane, cellophane, ladder. Okay, this will be there. अगर selectively permeable membrane की बात करें तो it will pass the solvent, solute भी pass होंगे, ions भी pass होंगे, लेकिन not all. Okay, so not all, there will be selection of the materials, then only it will get passed. Gases pass होते हैं, बाकी की चीजें जो है DNA, RNA and enzymes won't pass. So all the biological membrane, ओके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, तो दिस आर दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. देन टोनोप्लास्ट हो गया, टोनोप्लास्ट क्या होता है, इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल. ओके टोनोप्लास्ट वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. सो एक चीज अगर एक क्वेश्चन आ गया, द मेम्ब्रेन विच इज यूज्ड इन डायलिसिस, तो डायलिसिस करते हैं उसमें कौन सा मेम्ब्रेन यूज होता है. सो इन डायलिसिस
जो किडनी डायलिसिस वगैरह होता है ना, सो इन डायलिसिस द मेम्ब्रेन विच इज यूज्ड इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Okay, semi permeable membrane is used. Next we will talk about osmosis. Osmosis क्या होता है? Osmosis is also a kind of diffusion of only water molecules. Okay, so यहाँ पे जो है water molecules का diffusion होता है through a semi-permeable membrane. So there should be a semi-permeable membrane for osmosis to take place. So over here there is movement of solvent. Okay, movement of solvent, and mostly the solvent is water. Solvent molecules from a region of high concentration to a region of low concentration through a semi-permeable membrane. Okay, through a region of semi-permeable membrane. ओके, सेमी परमिएबल मतलब यहाँ पे थोड़ी चीजें पास होंगी, थोड़ी नहीं होगी. ओके, सेमी मतलब हाफ. सो हाफ परमिएबल, इट इज हाफ परमिएबल टू सब्सटेंसेस. जैसे कि सॉल्वेंट तो पूरा ही पास होता है इससे, लेकिन बाकी के जो चीजें हैं जैसे कि गैसेस पास होंगे, सॉल्यूट्स पास नहीं होंगे. सॉल्यूट आयन्स जो है वो पास नहीं होते. जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जैसे सेमी परमिएबल, तो सेमी परमिएबल में सॉल्वेंट पास होते हैं और गैसेस पास होते हैं, बाकी के चीजें जो है वो पास नहीं होती है. सो इस ऐसी चीजों में यू यूज, मतलब ऑस्मोसिस में ऐसा मेम्ब्रेन यूज करते हैं. ओके, wherein there is only movement of water molecules. तो water molecules easily pass हो सकते हैं through a semi permeable membrane. Okay. और जो एक प्रेशर होता है, एक प्रेशर which will retain osmosis, okay, which will not prevent osmosis, that is called as osmotic pressure. So और एक टर्म यहाँ पे आता है, that is osmotic pressure. So osmotic pressure का मतलब है the pressure required to prevent osmosis is known as osmotic pressure, and it is denoted as OP or pi. Okay, and if you want to calculate pi, मतलब osmotic pressure, so osmotic pressure is equal to ICRT. Okay, if you want to calculate this OP or pi, it is ICRT. I यहाँ पे means ionization constant. Okay, ionization constant. C का मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन. R का मतलब है गैस कांस्टेंट, जो कि हम लेते हैं 0.082. ओके, T का मतलब होता है टेम्परेचर. T मतलब यहाँ पे टेम्परेचर, एंड दैट इज इन टेम्परेचर इन केल्विन. So 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin.
ओके, सो इस पे हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ओपी, ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज is 24 atmosphere and that of NaCl is 48 atmosphere. What will be the direction of water movement? Okay, osmotic pressure of glucose is 24 atmosphere and that of NaCl is 48 atmosphere. What will be the direction of water movement? Option A, glucose to NaCl. Option B, NaCl to glucose. Option C, no movement of water, and option D will be none of the above. Okay, what will be the answer here of this? Okay, इसका आंसर क्या होगा? Option D, from NaCl to glucose. The answer over here will be from glucose to NaCl. Okay, so option will be from glucose to NaCl. क्योंकि water movement is from low osmotic pressure to high osmotic pressure. osmotic pressure का मतलब क्या है? The amount of solute जो है वो ज्यादा होगा. osmotic pressure का मतलब है amount of solute ज्यादा होता है. That means water जो है वो कम रहता है. Okay, so higher the solute content, higher will be the osmotic pressure. Lower the solute, lower will be the osmotic pressure. Okay, that means high amount of water will be there. So in glucose, जो glucose है, glucose में water high है. ओके, वाटर हाई है क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 24 एटमॉस्फेयर है. लेकिन जो NaCl है उसमें वाटर जो है वो लो है बिकॉज इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 48 एटमॉस्फेयर. ठीक है, ट्वाइस. तो इस वजह से जहां पे ज्यादा पानी होता है वहां से मूवमेंट होता है. सो द मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. From low OP to higher OP. The answer over here will be this one. Okay, answer is this one. सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं ना, ग्लूकोज और वाटर की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. Okay, so there is a glucose solution and there is a NaCl solution. So जब ये solution form में होता है तो एक से पानी दूसरे में जाएगा. So ग्लूकोज से पानी जो है वो NaCl में जाता है according to their osmotic pressure.
Okay. Next, we are talking about the different types of solution which you find. So there are three types of solution. Okay, तीन टाइप के solution है. One is hypotonic, isotonic, and hypertonic. Okay, hypotonic, isotonic, hypertonic. Now, what does this mean? So, when the concentration of solution is less than that of cell sep. तो हम यहाँ पे plants के बारे में बात कर रहे हैं. Okay, और when we talk about the animal also, मतलब animal cells also will have the cell sep. Cell sep मतलब the content, जो भी जो liquid content होगा, that is called as the cell sep. तो hypotonic का मतलब है when concentration of solution is less than that of cell sep. ठीक है, और आप बोल सकते हो कि more water and less solute in the solution. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. तो जो सोल्यूशन होगा उसमें ज्यादा अमाउंट वाटर होगा और कम अमाउंट सोल्यूट होगा. तो ऐसा सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं. हाइपो का मतलब लेस, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट. ओके, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट. आइसो का मतलब सेम. तो आइसो का मतलब सेम होता है. तो यहाँ पे वाटर एंड सोल्यूट जो है वो सेम अमाउंट में होंगे इन द सोल्यूशन. ठीक है, और जो हाइपरटोनिक है, हाइपर का मतलब है हाई. ओके, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब लेस. तो हाइपर हाई होता है. तो यहाँ पे वाटर जो है इज लेस बट सोल्यूट इज मोर इन सोल्यूशन. तो ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक बोलते हैं. Now, what will be the behavior of plant cell? Behavior of plant cell in these particular solutions. तो अगर आप hypotonic solution लेते हो, okay, if you take a hypotonic solution in a beaker, so there is a beaker. So एक beaker है, okay, एक beaker है. So there is a solution in this, which is a hypotonic. Okay, hypotonic. Now you put a plant cell over here. Cell wall है, this is the plasma membrane. Okay, और ये होता है यहाँ पे वैक्यूल और यहाँ पे होता है न्यूक्लियस. ठीक है, so this is the vacuole, सेल वॉल. सो अब क्या होगा, हाइपोटोनिक में ज्यादा अमाउंट वाटर है, लेस अमाउंट सोल्यूट है एज कंपेयर टू दी सेल सेप. तो व्हाट विल हैपन, द वाटर फ्रॉम द हाइपोटोनिक सोल्यूशन विल गो इनसाइड द सेल. ओके, प्लांट सेल के अंदर जाएगा क्या, वाटर जाएगा. ठीक है, जिसके कारण अब जो प्लांट सेल है, ओके, द प्लांट सेल will kind of swell up. Okay, the plant cell will swell up. So there is plant cell swells. Okay, Turgor
pressure is maximum. Turgor pressure is maximum. Such cell is called turgid cell. ओके ऐसे सेल को बोलते हैं टर्जिड सेल. नाउ टर्गो प्रेशर मतलब द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय द कंटेंट्स ऑफ द सेल. ओके जो प्रोटोप्लाज्म है वो अपना प्रेशर लगाता है ऑन द सेल वॉल एंड सेल वॉल अगेन अप्लाई सम प्रेशर ऑन द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट. तो जो ये सेल वॉल जो प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर. And this pressure is called as the turgor pressure. So wall pressure is equal to turgor pressure in the turgid cell. Okay, जो turgid cell होता है उसमें ये kind of चीजें रहती हैं. Also there is inward movement of water. Okay, water जो है वो inward move करता है. So यहाँ पे condition क्या होगी? Endosmosis. Endosmosis मतलब inside movement of water. So this happens in the हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ओके अगर हम एक सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन अगर हमारे पास है और उस सोल्यूशन में अगर हमने उस सोल्यूशन में इफ वी कीप दी सेल hypertonic. Okay, we keep the plant cell over here. वही उसके पास. So now what will happen? Hypertonic में hypertonic solution में water content जो है वो कम है as compared to the plant cell. Okay, so ये जो plant cell है उसमें पानी ज्यादा है. ओके हाइपरटोनिक में कम है. तो क्या होगा? पानी जो है सेल से बाहर आएगा इनटू द सोल्यूशन. ओके सेल से पानी बाहर ऊज आउट होता है इनटू द सोल्यूशन, जिसकी वजह से अब जो रिजल्ट मिलेगा आपको प्लांट सेल जो है का कंडीशन ऐसे हो जाएगा. सो जो इनर कंटेंट है तो पूरा ऐसे आ जाएगा. ओके सो दिस इज द सेल वॉल and this will be the protoplasmic content. Okay so over here you can see the cell will shrink. ओके ये प्लांट सेल है, इट विल हैव द सेल वॉल जिसकी वजह से ये पूरा हम सेल वॉल तो श्रिंक नहीं हो सकता. ओके इट इज रिजिड बट द अदर कंटेंट जो है वो सब श्रिंक हो जाएगा. तो सेल विल श्रिंक इन दिस केस. सो सच सेल्स आर कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स. ओके तो सच कंडीशन जो होती है इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस. तो जब सेल्स को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो यू विल अब्सॉर्ब plasmolysis of cell. Okay wherein all the content of the cell will shrink and come at the corner. Now plasmolized cell जो है वो वापस से ठीक हो सकता है जब आप इसको वापस से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखोगे. ठीक है सो दिस इज रिवर्सिबल ओनली एट अ सर्टेन ड्यूरेशन. मतलब सर्टेन प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स को आपने तुरंत हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया तो ये सेल वापस से आपको मिल जाएगा. लेकिन इफ सम टाइम गोज बाय ओके देन यू विल नॉट गेट द प्लाज्मोलाइज्ड सेल बैक. And if you keep a cell, a plant cell in an isotonic solution, तब उस plant cell में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि isotonic cell is the one which will have same concentration that of the
सेल सेप, ओके, सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा एज द सेल सेप, जिसकी वजह से देयर विल बी इनवर्ड मूवमेंट एज वेल एज आउटवर्ड मूवमेंट. सो देयर इज, जितनी चीजें अंदर जा रही है उतनी चीजें बाहर आएगी टू मेक एन इक्विलिब्रियम. सो इन दिस हाइपरटोनिक में प्लाज्मोलिसिस होता है सेल का, और हाइपोटोनिक में देयर इज सेल स्वेलिंग. ओके, नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, दैट्स व्हाई इट डजंट बर्स्ट आउट. बट इफ a animal cell is kept in hypotonic solution, then the animal cell will burst since there is no cell wall, okay, for the animal cell. Next we are talking about water potential. Okay, water potential is the free energy, मतलब basically water में there is presence of free energy, and this free energy is the one which is having the capacity to do some work. ठीक है, तो फ्री एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं. सो वाटर पोटेंशियल इज द chemical potential of water to do some work. This is the free energy, that is the capacity to do work. Okay, so water potential can also be called as chemical potential of water. Now it is in Greek letter use करते हैं to denote the water potential, that is psi W. Okay, and psi W of pure water is said to be the maximum which is taken as 0. Okay, उसको हम 0 लेते हैं. That is the maximum for pure water. इसके लिए जो यूनिट यूज होता है that is Pascal, and the equation to find out water potential is psi W is equal to psi S plus psi P. Okay, तो यहाँ पे psi S का मतलब है सल्यूट पोटेंशियल. ओके, और psi P is pressure potential. So when you put some solute in the water potential will decrease, okay, and it will become negative. So when solute is added in water, its water potential is decreased in, तो यहाँ पे वाटर जो है वो प्योर वाटर होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला है प्योर वाटर में मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है. तो इस प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. इट इज डिक्रीज्ड एंड बिकम्स नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई सॉल्यूट पोटेंशियल जो है उसको हम नेगेटिव लेते हैं. ओके, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. एंड प्रेशर पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर पोटेंशियल का मतलब है टर्गर प्रेशर. ओके, सो टर्गर प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ठीक है. सो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो then the water potential will also increase. So if pressure greater than atmospheric pressure is applied to a solution, then उसका जो water potential है वो भी increase हो जाएगा. So when pressure greater than
greater than atmospheric pressure is applied to the solution, its water potential increases. Okay, its water potential increases. So basically जो pressure potential होता है वो positive pressure होता है, that is the positive pressure, and इसको लगाने से मतलब अप्लाई करने से जो वाटर पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. ओके, वाटर का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो वाटर, अगर हम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट देखते हैं, if we talk about direction of movement, it will be from low osmotic pressure to a higher osmotic pressure. Okay, higher turgor pressure to lower turgor pressure area, high water potential to low water potential area. ठीक है. So if we solve a problem over here, so there is cell, okay, 3 cells are there. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सेल A, B एंड C. सेल A का OP जो है, सॉरी, सेल A का जो वाटर सोल्यूट पोटेंशियल है, इट इज -5 एटमोस्फियर. ओके, और जो यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल है, इट इज 10 एटमोस्फियर. नेक्स्ट सेल हैज सोल्यूट पोटेंशियल एज -7 एटमोस्फियर और प्रेशर पोटेंशियल है 15 एटमोस्फियर. थर्ड सेल हैज -12 एटमोस्फियर और प्रेशर है यहाँ पे 10 एटमोस्फियर. सो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर A to B to C, B का B to A, C is from B to C and D जो है from C to A. Okay, so you have to find out. So first का water potential कितना होगा? -5 plus 10 is 5 atmosphere. Okay, 5 atmosphere है. सेकेंड का है -7 plus 15. 8 atmosphere. Third one -12 plus 10. यहाँ पे कितना होगा? -2.
Or we can change the question. Okay, let's change the question. यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल जो है टू एटमॉस्फेयर है. Over here it is 5 atmosphere and here 10 atmosphere. अब बताओ मूवमेंट ऑफ वाटर. ओवर हियर वाटर पोटेंशियल कितना आएगा? -5 + 2 -3. यहाँ पे -7 + 5 is -2 एटमॉस्फेयर. इधर में -2 एटमॉस्फेयर. ओके, बी एंड सी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा. सो -3 to -2. तो मूवमेंट कहाँ होती है? ए से बी और ए से सी. ओके, सो मूवमेंट विल बी फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी. तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं ऑन दिस टॉपिक. ओके, सो आज हमने किया है modes of transport, different modes of transport, that is diffusion, facilitated diffusion and active transport. Okay, then we had discussed the types of solution. Membranes हमने discuss किए. 4 types of membranes are there. One is permeable, non-permeable, then semi-permeable and selectively permeable. Then we discussed the types of solution, different types of solution. Okay, hypotonic, isotonic and hypertonic, and what is the behavior of plant cell in each of them. And last we discussed about the water potential. So this is what is required to know in today's session. So thank you everyone for attending that session. See you next time.